Namaskar my dear students, welcome again. In this video I will put focus on numerical. इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल पे फोकस करूंगा बिकॉज न्यूमेरिकल इज बिग प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल एक बहुत बड़ी समस्या होती है और बच्चे इनसे दूर भागते हैं. बट इन दिस वीडियो I will explain all terms that you have to use while solving the numericals. And after watching this video, I hope, okay, that all concepts related with mirror numericals will be clear. Even for IIT and NEET level, may possible question level will be high in NEET or IIT, but the concept remains same. तो मेरा सजेशन है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, अदरवाइज नहीं देखना. अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे that is just wastage of time. But at the same time you will see, if you see the full video, then I hope you can solve any type of numerical related with mirror very easily. और इसमें मैंने आंसर वेरीफाई करने का मेथड भी बताया है just by using our general concept. So without wasting time, let's start. Okay, here the topic or heading I given: key points to be kept in mind while solving any numericals of mirror. Starting from mirror formula, as you know, 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, where v is the distance of image, u is the distance of object, and f is focal length. Now for magnification formula, that is hi, height of image upon height of object, that is also equal to minus v upon u. Listen, यहाँ पे माइनस नहीं होता है, इस बात का आप माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना. माइनस only here we will take minus v upon u. Now here you can see there are two mirrors, one is concave and one is convex. Here you can see this one is the focal length, that is distance between pole and focus, and this one is also focal length, that is distance between pole and focus. That focal length of this concave and this one convex. Now here we know the relation, that is radius of curvature, that is double of focal length. Okay, that is r is equal to 2f, valid for this one also. And this one is the case of plane mirror. Okay, in plane mirror, if this one is the object, this is kept in front of plane mirror, then the image will be formed at the same distance and same size, virtual also. Okay, now I will discuss all the terms that you have to use while solving the numericals, and you can verify your answer also. Let's see. Here, starting from sign convention, okay, that here direction of light, this one is concave and this one is convex. Here, if I put axis here, let us assume if I put a vertical axis here in this way, here in this way, just like mathematics, we have x-axis and y-axis. Now you can see this side, that is positive side, okay, and this side is negative side. So all the terms in this side, that is negative, and all the terms in this side is positive. Similarly, this is valid for here also. If I put axis here, this in this way, vertical line. Now same valid for this. This side negative, this side positive. Now here you can see, in case of concave, focal length this side and it is negative. Similarly, r is also this side, this one also negative. If the image form of upper side, that is positive, downside of this axis negative. Same thing is here, focal length is formed this side, that is positive side. So this one focal length positive, radius of curvature also positive, and this side negative. Upside of principal axis we will take positive, downside negative, and we keep object always, listen, upside of principal axis, always ऊपर रखते हैं principal axis के, नीचे नहीं रखते object. Now we have to keep these terms in mind. U always negative,
either for concave or for convex, even in lens also. Okay, in a special case only, that for the derivation of lens maker formula we just consider u positive. Okay, that is not at your level for 10th class. Otherwise u always negative. ये माइंड में रख लेना, u always negative. Focal length of concave always negative. Since focal length negative means obviously radius of curvature value that is also negative. V, image distance, image location, image position, all these are same terms, may be positive or may be negative. V की value positive भी हो सकती है और negative in case of concave. Now see convex. In convex focal length always positive, always. V always positive, and similarly radius of curvature value is also positive. So these are the some terms, okay, related with concave and convex mirror. You have to keep these points in mind while solving the numericals. Okay. Now, next, how to verify your answer. How to verify your answer, whether your answer is wrong or right. Okay. See, let in any question you have to find the value of u. आपको u find करने को बोला जा रहा है, and the answer you got, और आंसर आपने फाइंड आउट जो भी किया वो पॉजिटिव है, लेट अस इन 5 7, नेगेटिव वैल्यू नहीं है इनके आगे, नेगेटिव साइन है, इट मींस एरर इन सॉल्यूशन. इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में एरर है, बिकॉज u वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव. u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए. ओके, आइदर इन कॉनकेव और इन कॉन्वेक्स मिरर और लेंस. ओके, यहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं. इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर you got here, see the word concave mirror. आपको किसी क्वेश्चन में फोकल लेंथ फाइंड आउट करने की बोली जा रही है, और फोकल लेंथ के आगे दैट इज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव 2 3 etc. It means error in solution, because as you know focal length of concave mirror always negative. Now if focal length of convex mirror you got after solving a question, convex mirror, और उसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गई, वैल्यू निगेटिव आ गई. एज यू नो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है. इट मींस एरर इन सॉल्यूशन. तो आपको फिर से सॉल्यूशन चेक करना होगा. दीज आर द जनरल आइडेंटिफिकेशन हाउ टू वेरीफाई योर आंसर. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v. v फाइंड करनी है फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, एंड द आंसर यू गॉट. आपको कोई क्वेश्चन है कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड, उसमें v फाइंड करने को लगे, and answer you got that is -2 -3. It means error in solution, because v always positive for convex mirror. Okay, हमेशा v positive होगा convex mirror के लिए. concave के लिए it may be positive, may be negative, depend on situation. Okay, so these are the some terms that is related. Now I will use all these terms when I will solve numericals, how we can verify our answer also. Okay, so now let's see another terms that is related here. If the value of magnification is greater than 1, say 1.1 1.2 for convex mirror, it means error in solution. Okay, it must be always less than 1. convex mirror में हमेशा मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 1 होनी चाहिए. ओके, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता. हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज का साइज है छोटा दिखता है. नाउ फॉर ए प्लेन मिरर द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन दैट इज +1 or simply 1, means size of object equal to size of image. And you know virtual image always erect and real image always invert. और किसी न्यूमेरिकल में आपने फाइंड आउट किया वर्चुअल इमेज के आगे नेगेटिव साइन आ रहा है, इट मींस एरर इन सॉल्यूशन. वाइस वर्सा वैलिड फॉर रियल इमेज आल्सो. रियल इमेज आपने फाइंड आउट किया उसके सामने तो साइज साइन आ रहा है दैट इज पॉजिटिव, इट मींस एरर इन सॉल्यूशन. आई होप नाउ द कांसेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ
Next is verification by the use of image formation concept. Means in any question numericals लोकेशन दी होगी either ऑब्जेक्ट की और इमेज की फोकल लेंथ दी होगी, then how we can use that data for just to verify our result. So for this you have to keep all these cases result in your mind. Okay, starting from first case, this is concave mirror and object is at infinity. Now when object is infinity, image format focus, real inverted and point size. Now when the object between infinity and center of curvature, okay, then where is the image form between C and F? Real smaller than the object and inverted. When the object is at C, then image form of the same size, real and inverted, and form at C, same point. Now when the object is between C and F, this one is very important case. Most of the numerical is taken from this case. Okay. So when the object is kept between C and F, the image that is formed, okay, beyond C here, okay, between C and infinity, or you can say beyond C, real, enlarged and inverted. Okay. Now next case, that is here, when the object is kept at F in front of convex mirror, sorry, concave mirror, the image will form at infinity and highly enlarged, okay, infinitely large, or you can highly enlarged and invert. And this one is the special case, or you can say last case or first case also. It depends on you if you assume it first or it last. Only this, in this case, the image formed by concave mirror is virtual. When the object gets between pole and focus, तो पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाता है, in that case concave mirror form virtual image, and virtual image always erect, हमेशा erect हो, inverted नहीं. See, all image are inverted and all are real. See, सारे inverted दिखेंगे, लेकिन here it is erect. So if image is erect, it means it's virtual, or if virtual means erect होगी. Now here location and behind the mirror, image from behind the mirror. Virtual image हमेशा behind the mirror भी बनती है. It's also either in case of plane mirror also behind the mirror ही बनेगी. In convex mirror also virtual, enlarged and erect. So this one is also important case. Now in case of convex mirror, here is the location of object. Here in convex mirror, image doesn't depend on the location of object. Okay, let us say आप बस के अंदर बैठे हो, बस में ड्राइवर सीट के जस्ट क्लोज बैठे हो, तो अपनी इमेज देखो छोटी दिखेगी. लास्ट सीट पे जाके देखो, बैठ के देखो, तब भी छोटी दिखेगी. So it doesn't depend on position. So generally we consider only two cases here, but this one actually you can consider it at one case also, no problem. Here object is kept. Now the image is formed and image is erect, small in size, and erect image always virtual. So virtual, small and erect. तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन m की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, क्योंकि हमेशा छोटी होगी, बड़ी कमी नहीं हो सकती. अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए, एरर होगी सॉल्यूशन. And when it is at infinite object, then it is image is just point size and format focus. Okay, again virtual image ही बनेगी. convex हमेशा virtual image बनाएगा. क्यों? convex mirror में हमेशा erect हमारी इमेज दिखती है, और erect image is always virtual. So all concept you have to keep in mind, okay, while solving this question, and all these concepts I will use when I will solve the numericals. Okay, and how you can verify your result by using such type of ray diagram easily. Okay, now how to solve numerical easily. These are the steps. You have to apply all these steps, not here for any numerical you can apply, but here this is for light. That's why I am using ray diagram, etc. Otherwise these are some are general concept. Okay, for example, write the given value in question and what you have to find according to question.
for any chapter of numerical, that is light, electricity, magnetism, while any type of numerical, any chapter. Now first step, write the given value in question and what you have to find according to question. Okay. Let us assume in question you have to find value of u, then you will write just u. Okay. Let's here here u, then write u and put question mark, and whatever the given value, just write the given value. V is equal to, let us assume V equal to 2 centimeter, 5 centimeter, whatever, then just write 2 centimeter. F is given, then you must write F also. Okay, let us assume F 1 centimeter, so you have to write in this way 1 centimeter. Okay, now make rough ray diagram according to question, that I will explain in question. मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा. एक रफ रे डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बनाना है. प्रेजेंट कॉनकेव मिरर दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है, दिस वन इज फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट की हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2, सो दिस वन इज यूनिट. ओके, here so you have to make rough diagram. See all the given unit carefully, means सारी यूनिट को आपको देखना है कि सारी यूनिट सेम है या नहीं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर और मीटर, इन दिस वे. नाउ यूज सुटेबल फार्मूला. फॉर एग्जांपल इसमें आपको यू फाइंड करनी है. सुटेबल फार्मूला कौन होगा? मिरर फार्मूला, दैट इज 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. तो इसको आपको सुटेबल फॉर्म यूज करना है. नाउ व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, जब आप वैल्यू रखोगे फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूले में, लेट अस assume 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, तो वहां पे आप f u v अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन की, उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करो. बट एक बात आपको इसमें माइंड में रखनी है, डोंट पुट साइन फॉर अननोन वेरिएबल व्हाइल सॉल्विंग. लेट अस assume यहाँ पे u फाइंड करना है, तो u का जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर्मूले में, यहाँ पे आप u को पॉजिटिव ही कंसीडर करना. यहाँ पे u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ऐसा ना हो यहाँ पे भी आप u निगेटिव फील, यहाँ पे आप निगेटिव साइन लगा दो. नो, जब u फाइंड, जिसको फाइंड करना है उसके लिए उस पे आप साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, बट उस पे आप अप्लाई नहीं करना, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा. वैलिड फॉर u v f, तीनों के लिए वैलिड है. जो भी आपको फाइंड करना है उस पे आप कभी साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करें. डू कैलकुलेशन केयरफुली, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप एलसीएम हो, साइन चेंजिंग हो, उसका ध्यान रखें. ऑलवेज राइट आंसर विथ यूनिट. तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको यूनिट के साथ लिखना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव में आप व्हाइल आंसरिंग जब आप टिक मार्क करोगे तो आप चेक कर लो, फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर, ये ऑप्शन हो सकते हैं, मिलीमीटर भी हो सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन you have to verify which one is correct. 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, तो इस यूनिट को आप चेक कर लें. ओके, नाउ ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय यूजिंग जनरल कॉन्सेप्ट. ये मैं आपको क्वेश्चन में आपको सॉल्व करूंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा. ओके, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे.